I hope everyone is staying safe and doing well. I hope you have enjoyed our previous videos. And today we have our guest Faisal Danish. He's a young professional banker. He has over 5 years experience in corresponding international banking, and right now he is working with one of the largest private commercial bank here in Toronto in the financial district head office as manager MIS and manager controls. And his education background is basically he has done BBA from IBA Karachi, and then he moved to UK to further continue his studies and completed MSc in International Management and Business from University of Manchester, and he is also a qualified CFA. And Faisal, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? All right? Yeah, alhamdulillah, everything is good. So thank you so much for sparing time and coming for this venture. नहीं, I'm here to help anyways. So कैसा चल रहा है सब कुछ? All good, alhamdulillah. बिल्कुल सही चल रहा है. COVID times are very uncertain. आपको पता ही है. So far so good. Can't complain. So let's begin. Faisal, ये बताइए कि आपकी early childhood education, background, थोड़ा सा career in Pakistan. So I'm from Hyderabad, Pakistan. मेरी schooling वहाँ पे हुई. I spent almost 16 years over there. Matric मैंने किया वहाँ पे. There is school, I don't know how many people know about this, St. Bonaventure High School, Hyderabad. वहाँ से I completed my matric और उसके बाद I moved with my family to Karachi. I did my intermediate from Comics Institute of Business and Emerging Sciences. It's a renowned college in Gulistan, Johar. वहाँ पे मैंने इंटर इन कॉमर्स किया. I think I was one of the top 40 A1s in entire Karachi board. So I did that. फिर वहाँ पे I had to make a career choice. A lot of my friends went for the option of chartered accountancy, but I didn't want to pursue that because I didn't gel in. तो मुझे कुछ और करना था. So I prepared for IBA का entry level test. And I got through. उस ज़माने में how it used to be कि आपको main campus और city campus में थोड़ा difference होता था in terms of fee structure only. Otherwise everybody was qualified. तो अगर आपका test में certain score level के ऊपर आता था, so you could go to main campus. अगर उससे नीचे आता था you go to city campus. अगर उससे नीचे आता था BBA MIS, वो भी city में. और अगर उससे भी नीचे आता था BCS. That's how it was, I think so. It's been 14 years now. तो मैं काफ़ी भूल भी गया हूँ चीज़ों में. So फिर मेरा मेन कैंपस में हो गया था. I studied BBA over there, 4-year program, and I used to go to Karachi University. Karachi University के अंदर हमारा कैंपस होता है IBA का. So वो मैंने किया. उसके बाद I worked for 1 year with Standard Chartered. I started my corporate life over there in trade finance. उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया. I went to University of Manchester, did my MSc जैसा कि आपने बताया viewers को. उसके बाद फिर I took a break from things. I tried out different things. I got an internship in Singapore for 6 months. I was there. I got this opportunity to work in Tanzania, Africa. I was there for 1 month, but it didn't work out, so I had to leave that. Then I just did nothing, spent time with my friends in Dubai for a few months. So after trying out all these things, I came back to Pakistan. I started working at JS Bank and then in correspondent banking division. उसमें फिर I spent 4 years. I had a great experience. I got to travel abroad with the senior management. I was promoted 3 or 4 times consecutively. I learned a lot. उसके साथ साथ ही फिर I finished my CFA as well. Chartered Financial Analyst का एग्ज़ाम होता है. Finance का is pretty rigorous. उसके मैंने 3 levels पास किए and now I'm a CFA chartered holder. So that was my entire education and experience before coming to Canada. So tell me, like, how did you choose your career? You are a professional banker, so how do you enter the banking profession? Was it a very decisive decision? No, not at all. I never wanted to be a banker, to be honest, because in my family, as you know, my family well, we all are bankers. My father, my sister, my brother, they were all bankers. So बचपन से banking की बातें सुनता था. So I didn't want to be a banker, but as life happens, so that was the first job I got. After graduation, I just took it. So if I took it, so फिर उसी में मैं आगे करता गया, excel होता गया और career मेरा उसमें. Right, that's how it is.
So since now you are in banking, tell me like what do you like or love about this job? The job I'm in now, Yeah, or now. my throughout banking career? Throughout banking and maybe whatever you are doing right now. So the thing is that मेरा base थोड़ा banking का अच्छा बन गया है. Like in trade finance and in correspondent banking, I got an opportunity to work with different areas of the bank. So now I know inside out how banks work. Bottom line कैसे affect होती है, top line कैसे होती है, what are the key elements to look for in a bank's stock, आपको क्या देखना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं उन चीज़ों को. सो हुआ क्या था व्हेन आई केम हियर, obviously it's not very easy to get in the same role or a same level जिस पे आप होते हैं and back home wherever you're from. But the thing is that if you spend some time in the industry, you will, it's my belief, I don't know how true is it for everybody, it's my own belief that you will ultimately get where you want to. So I came here, I started off in treasury back office. I knew how it works, but यहाँ पे the thing was so coming from a small bank, you're doing everything on your own, right? यहाँ पे, so RBC, just to give an example, is so big. It's a global SIFI, systematically important financial institution. Meaning, God forbid, something happens to RBC, a global meltdown हो जाएगा. Financial system is so big. So अगर जब मैं ऐसे institution में गया तो the size was huge. फैसल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हमारा इंटरव्यू चल रहा है तो मुझे एक आपका लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी एंड यू वर टेलिंग मी समथिंग अबाउट फायर मूवमेंट एंड यू आर इंस्पायर्ड. वुड यू माइंड टेलिंग अवर व्यूअर्स अ बिट अबाउट फायर, व्हाट इट इज, एंड आर यू स्टिल फॉलोइंग दैट सेम path? Yeah, so it's a movement actually. I'm not a part of it, but it's a movement inspired by a young generation who are pretty much disillusioned with the notion of 9 to 5 job for 30-35 years, and then you retire. Maybe you don't have the health to travel, or you don't give time to your family. कि आप करियर इतना फोकस हो जाते हो कि you stop caring about other things. So उसको काउंटर करने के लिए जो हमारी नई जनरेशन है, दे ग्लोबली बात करो, नॉट जस्ट नॉट अमेरिका, ग्लोबली देयर इज revolution, I'll say, it's called FIRE, financial independence, retire early. So there are two aspects to it. Financial independence means that you don't need to work. और आप इतना financial independent हो गए हैं कि if God forbid something happens, you can sustain yourself. और एक होता है RE, retire early, means कि आपने बना लिया कि आपने उसमें पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की at age 40 मेरे ये एक्सपेंसेस होंगे, उस एज में मुझे इतनी इनकम स्ट्रीम आनी चाहिए कि मैं एक्सपेंसेस मीट करूँ, देन आई डोंट नीड टू वर्क. द आइडिया इज़ टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ कि 9 to 5 इज़ नॉट एवरीथिंग. मैं कहीं से बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ, या मेरे पास इनकम आ रही है तो आई डोंट रियली नीड टू वर्क. उसमें भी पीपल फोकस ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, दो सॉर्ट. तो I'm not yet there, obviously, but the goal is to retire at 40. फैसल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इस सारे प्रोसेस में did anybody as a personality inspire you, your teacher, your parent, source of motivation or inspiration कोई था आपका या है? I don't know if people will like this answer or not. There wasn't anybody. It was my own self. Because I wanted to grow, and this is how I perceive things. Again, so to your point, यहाँ पे everybody's Canada is different. सबका थॉट प्रोसेस अलग है और सब अपनी जगह सही है. मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा बैंक में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तुम CSE करो, तुम टेलर लग जाओ. मतलब मैं वो कर सकता था, बट ऐसा है कि मुझे अगर एक बात चल रहा है मेरा होलसेल बैंकिंग का, एंड द अपॉर्चुनिटीज हियर आर देयर. It's not that easy, agree. It's a bigger market and more players in the market, but you can still make your mark. To be very honest, I was my own motivation because I wanted to grow. Right from childhood, you were like that. नहीं, लेकिन childhood तो no, I mean childhood, teenage or early career. Yeah. Like you're self motivated. Yeah, so you know my family, right? मेरा पाथ सबसे अलग रहा है. मैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गया, मैं उनके साथ ही पढ़ा. उन्होंने मेरे बचपन में पढ़ाया, obviously schooling में they really helped me a lot. But after that I was on my own, and my friends, उन्होंने मुझे support दिया, moral support हमेशा दिया, but it was कि अगर वो VP है तो मुझे VP बनना है. No, it was you chose your own path and you were
your own motivation basically. Gee, I don't know how popular that answer will be, but that's No, that's a different that's why we are here to get different answers. We बिल्कुल don't want to follow नहीं, that I was one. intrinsically motivated and then so I just looked around me. मैंने कहा अगर if everybody is doing okay, struggles भी हैं लोगों की, ऐसी बात नहीं है, but you always look at people who are doing okay and if they are doing okay, why can't you do okay? ये बताइए आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे you count them as your either strengths or you feel proud of them? Proud, I don't know. I should feel them or proud or not. But one thing about me, I think so, is that I try to go into the detail of things. तो अगर कोई चीज़ है तो मैं उसके बारे में ज़रा information लेता हूँ. I try to understand where they're coming from. And this is what I would advise everybody who's planning to come to Canada or anywhere in the world for that matter. Try to get into the system. आप सिस्टम को समझें कि काम हो कैसे रहा है, how is the ecosystem around you working, and then you try to make a mark in that. That's what I try to do everywhere. जहाँ मैं गया हूँ, I've gone into the system और मैं देखा है कि काम कैसे हो रहा है वहाँ पे, how are the people, how's the culture, how's the lifestyle. तो I think I do it well, but I should still do it better. Right. So you are detail oriented basically. Yes, in a way. Yes. That's the only thing you count as your strength, or there are a few others? Well, I'm persistent. Persistent. And एक चीज़ है which I feel, at least I can speak from my own people. हम लोग काफ़ी risk averse हैं. Risk. तो in the sense कि जो मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बताई, मतलब I went to Singapore, I went to Tanzania, I tried out things. मेरी जगह पे बहुत कम लोग हैं, शायद अब चेंज हो रहा हो, I don't know. I'm talking about the time at the back. Right. तो हमारे generally I feel that we are very risk averse nation. We don't take on new challenges, or we don't try out things in a different manner. कि यार ये भी कर सकते हैं आप, you know, this is something you can give it a shot. And the problem is, so it stems from the thing that in our culture failure is frowned upon. In case you fail, or in case things don't work out, means कि that's the end of That's it, the end. which is very wrong. ऐसे नहीं होना चाहिए. So उस sense में I feel I'm a bit different in the sense that I take on different risks. I try to go for the big goals, even if I don't get them, that's okay. At least I try. And I'm the sort of person कि मैं नहीं चाहता कि 50-55 का आगे मैं हुआ, I don't know. इंशाल्लाह. तो I don't want to have those regrets in my life कि यार मैं ये भी कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया. That's the sort of person. अच्छा लगा मुझे ये आंसर सुन करके, लाइक एक तो परसिस्टेंट हैं एंड रिस्क टेकर हैं, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लोग हमारे यहाँ आप सही कह रहे हैं कि रिस्क नहीं लेते और फेलियर्स का बचपन से ऐसा उनके दिमागों में जो खौफ होता है. And then again वही बात जो इंटरेस्ट मोटिवेशन की, बिकॉज मैं बचपन में करता था, I used to compete with my peers कि उसके स्कोर मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरे कम आए, मैंने क्यों नहीं आया. But over time you realize that you're fighting against yourself or against the circumstances. तो उसमें the good thing is you try to improve yourself. एक पॉजिटिव चीज़ है कि ना कि आप किसी और को नीचे गिराओ बल्कि आप ऊपर करो. So that's what I believe. Moving on to what motivates you to, like पाकिस्तान में भी आप सक्सेसफुल थे, तो एकदम इमिग्रेशन का ख्याल कैसे आया या क्या रीजन थे इमिग्रेशन के? Yeah, multiple reasons. वहाँ पे भी मैं I was doing okay, तो ऐसी बात नहीं है, I was doing fine, but I feel that Canada is a bigger market. It gives a bigger potential for you to grow. And one thing again, वही वाली बात that coming from Pakistan, an average job, अच्छी गाड़ी क्या लेगा वो? You can have max Corolla or Civic, max more or less. थोड़ा और महंगा चले जाए आप तो maybe a Accord. यहाँ पे you have all sort of cars. You name it, you have it. और यहाँ पे लेना आसान है. अब अभी मैंने जैसे घर लिया अपना, मैं पाकिस्तान में अगर मैं होता तो it would have been almost impossible for me. बिकॉज ये सिस्टम ऐसा है कि गिव्स यू लेवरेज. लेवरेज मीन्स कि आपके पास आप बैंक के पास जाओ और आपको फाइनेंस मिल सकता है. दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ द सिस्टम एज वेल. नेगेटिव सेंस में कि पीपल अब्यूज इट. वो क्रेडिट कार्ड्स के साइकिल में फंस जाते हैं, ओवरड्राफ्ट में चले जाते हैं, LOC के चक्कर में फंसे रहते हैं.
But if you play it right, there's a lot of opportunities there. तो उस सेंस में I felt Canada is a bigger market, a better place to be. Going forward, अगर मेरे बच्चे हुए कभी, health care is taken care of, education is taken care of. Obviously taxpayers के पैसे भी जा रहे हैं. But at least the good thing is, again, you see your money being invested somewhere, right? मैं अगर विंटर में यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ तो I can see the snow plows working. तो मुझे नज़र आ रहा है कि यार चलो मैं पैसे दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ दुनिया से, but at least I can see something happening in front of me, right? पाकिस्तान में मुझे unfortunately मुझे नज़र नहीं है. And finally, I wanted to have a better passport in my life because मुझे traveling का थोड़ा शौक है and I didn't want to. I'm the sort of person, nothing against anybody else, but I'm not the sort कि मैं ज़िंदगी भर वीज़े लगवाऊँ बैठ के. I wanted that peace of mind in me, and Canada passport gives you. Since moving to Canada is always remains a challenge, so what challenges you come across in particular, and what generally people do come when they immigrate to a country? So yes, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मुझे कोई इतना बड़ा चैलेंज फेस नहीं हुआ था. I relatively eased in the system well because मैं बाहर रह चुका था. I knew that बाहर के कल्चर्स वगैरह कैसे होते हैं, उनका उठना बैठना कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलते हैं. I had a fair understanding of it. तो that's one reason, that's one issue people face. Number two is the climate. Weather in the winters is pretty harsh here, like everybody knows. Canadian winters are famous. But again, मैं थोड़ा बहुत सर्दी में देख चुका था UK में, इस लेवल की नहीं, but I had seen winters, तो manageable था, इतना कोई बड़ी बात नहीं. For winters, if you're wearing thick jackets and if you're covering yourself well, you're fine. तीसरा challenge तो मैं नहीं कहूँगा. For me, so it's a blessing that like I can communicate well. मैं हर बंदे से उसके लेवल पे उसकी बातें कर सकता हूँ. If you make a guy in front of me, sit in front of Jamaica, मैं उससे बात कर लूँगा. Singaporean होगा, मैं उससे बात कर लूँगा. तो communication, अब unfortunately the problem is कि हमारे मुल्क से जहाँ से हम आते हैं, foreigners के साथ इतना interaction कम है बहुत ज़्यादा, right? You rarely see any foreigner over there. Foreigner आता है तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है कि गोरा है हमारे पास. I don't know why that is, but so हमारा interaction कम होता है. So जब ये लोग, I mean, जब whoever comes here तो उसको face होता है कि मैं कैसे डील करूँ. और then one thing which I feel is very common among our people is like हम लोग फिर अपने लोगों में घूमते रहते हैं. We hang out with our own friends, our own people, our own type. हमारे अपने jokes होते हैं, तो इतना सा सोसाइटी के अंदर ही अपना एक अलग जोन बना लेते हो, which I think is not right. अगर आप सोसाइटी में आए हो तो हर सोसाइटी अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं. You try to adopt the positives, you stay away from the negatives. So yeah, that's it. True, आपने बहुत सही कहा फैसल. Like I agree with you. Like हम लोग culturally adjust करने में we take a lot of time or reluctant basically. What are the three things that Canadian society has added value in your life, or आप समझते हैं अगर वो पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अडॉप्ट कर ले तो we would also be improving or at least be successful in our nation as a nation? That's a good question actually. तीन चीज़ें. First of all, courtesy. आदत हो गई है हर चीज़ पे sorry, thank you, apologies, can I help you, you know, those sort of things. You don't hear that in Pakistan. Please, you don't hear that in Pakistan. First thing, basic courtesy हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, regardless who you are. Secondly, rule of law. रात के 3 बजे हो, रेड सिग्नल हो, I will still stop at the signal because I am supposed to stop at the signal. That's how it's supposed to be, right? वो चीज़ वहाँ पे मिसिंग है. मतलब अभी मैं कभी जाता हूँ तो I stop at the red signal, people start honking behind me कि move on. Even though I'm not supposed to move on, but rule of law है यहाँ पे, follow होता है. Speed limits हैं तो follow होती हैं. तो certain extent obviously कुछ over speeding भी हो जाती है, but majority of time नहीं होती. And thirdly, I feel equality of the system. आप चाहे जो भी हो, you're still in the system. तो अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो कोई अच्छा पार्क है या कोई अच्छा बीच का हट है तो मुझे सिफारिश लगवानी पड़ती है. वो चीज़ यहाँ पे. So everything is for everybody to enjoy. Exactly. It's a public good.
फैसल आप प्लीज़ वैसे मैं एग्री करूँगी लाइक 2 years ago व्हेन आई वेंट टू जी। पाकिस्तान और मेरा बेटे ने उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था कहते अम्मी यहाँ के लोग कितने रूड हैं लाइक कस्टोडियन यहाँ कहलाते हैं स्कूल में जो स्वीपर्स बेसिकली सफाई होते हैं उनको ये स्वीपर नहीं कहते हैं कस्टोडियन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं अम्मी हम लोगों के घरों में जब आता है सफाई कलेक्ट करने वाला हम उसे ओए अबे ले जा जी। इस तरह बात करते हैं, ना कोई थैंक यू करता है ना कोई प्लीज़ कहता है ना रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करते हैं ऑल्दो ही इज डूइंग अ बिग जॉब फॉर अस। और मैंने किसी को उसने किसी से कुछ चीज़ ली थैंक यू कहा तो वो कह रहे ओए तो मेरा बेटा लाइक ही वाज 7 years आई थिंक सो एट दैट टाइम एंड ही नोटिस दिस थिंग कि लाइक बेसिक मैनर्स तो हमारे इस्लाम भी सिखाता है अच्छे इखलाक और इस सोसाइटी में आके हम पीपल आर वेरी फ्रेंडली ओवर हियर। वहाँ पे आप एक्चुअली लोगों से दूर भागते हो कि ये मुझसे बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, क्या पता अभी पिस्तौल निकाले, who knows, I don't know. So एक fear वाली कैफियत है वहाँ पे. That was another reason why I wanted to move to Canada. वो मुझसे पहले सवाल मिस हो गया. Just to have a peace of mind. मतलब जैसा भी है आप चाहे मिडिल क्लास ही रहेंगे आप, बट आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे. What was the most difficult part for you leaving Pakistan behind? My family. Your Yeah, family. my parents, because they are very close to me और के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया है, so obviously that was pretty much the only part. That's the only hard part. Okay. काफ़ी लोग वहाँ पे जॉब काफ़ी लोग वहाँ पे नहीं जर्नी में देखा जॉब के साथ अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, but job is just a means to an end. It's not, you're not born to do a job. You do a job to pay your bills. तो इतना अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए. आई थिंक इट्स जस्ट अ जॉब. इमिग्रेशन में या कैनेडियन सोसाइटी ने आपके अंदर पर्सनली क्या चेंज कोई ऐसा लाया? Yes, in a certain manner. I'm more calm now. And I feel कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही है तो थोड़ा टाइम लेके हो जाएगी. Impatience ख़त्म हो गया मेरे अंदर mostly. तो अगर मैं ट्रैफिक में फंसा भी होता हूँ, I'm just enjoying. I listen to music, I look around, the scenery is good. That's it. तो और ये कि the good thing about this country, good or bad both. Generally speaking, इस country में ना बहुत ऊपर जा सकते हैं, ना बहुत नीचे जा सकते हैं. बहुत नीचे जाएंगे, they will help you. बहुत ऊपर जाएंगे, they will tax you. So majority of the people here are middle class. अमीर लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं. There are rich people who have $1 million houses and all those. But that's the good thing I like about the Canadian society. It will always be there to support you. और ये बहुत सारे developed countries में भी नहीं. Yeah, even in US, God forbid something happens to you. एक health का अगर बड़ा झटका आए, and if you don't have insurance, you're in trouble. How would you compare with UK then? So UK का system is more or less similar. Same. It's a welfare society. Welfare Yeah, society. they tax you a lot, but it benefits them. UK का healthcare is like one of the best. It's called National Healthcare System (NHS), and it's very good. In Canada का भी अच्छा है. Yeah. Universal health. Okay, finally we are moving towards the end part. जी. Faisal, मुझे ये पूछना है कि anyone coming to Canada उसके लिए स्पेशली आप क्या सजेशन देंगे यूथ को, कोई मैसेज कि वो आप भी यूथ हैं बट और भी छोटे बच्चे जो हैं टीनेज में या अर्ली अभी कॉलेज लाइफ में हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? एनीवन इमिग्रेटिंग टू कनाडा, व्हाट वुड यू सजेस्ट? What I would suggest is try to come as soon as possible. Okay. First of all, because realistically speaking, nobody knows कि immigration खुली कब तक होगी. जितना आप सोचेंगे कि मेरी जॉब है, घर वाले हैं, मुश्किल है, सैलरी है, try to come early and you try to come with an open mind. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वही गाड़ी चलानी है मैं पाकिस्तान में चला रहा था, वही नौकरी करनी है जो मैं पाकिस्तान में करता था, या मुझे वही लाइफस्टाइल चाहिए जो मेरा पाकिस्तान में होता था, इट कैन हैपन. बिल्कुल हो सकता है, बट चांसेस थोड़े कम है उस चीज़ के. सो यू नीड टू स्टार्ट, टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड दिस सोसाइटी विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मुझे लगता है, आई पर्सनली फील. So just come with an open mind, be happy here, people are nice, weather is a bit harsh, yes, but everything is good.
Taxes are high. ये भी सोचे हैं please that taxes will kill you. But it's a good investment on yourself. It's worth it. तो यूथ को भी यही 3 पॉइंट्स ही हैं जी, या it applies. कोई और Again, बात ये है कि जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर है. जितना आप लेट कर रहेंगे, you will start having responsibilities. Right. और आप अपने एक जोन में चले जाते हैं. If somebody coming over there who's a 45-year-old guy who's a senior vice president in any bank, Right. chances of that replicating in Canada are less because यहाँ पे भी टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रो किया जाता है, नर्चर किया जाता है. तो अगर आप अपने माइंडसेट के साथ आ रहे हो, दैट्स व्हाई अनदर थिंग व्हिच आई मेरे साथ तो नहीं हुआ था, बट व्हाट हैव हैपेंड, व्हाट आई हैव सीन कॉमनली हियर is that people get stuck in that Canadian experience. To get it, so it's a chicken and egg situation. For Canadian experience you need a job, for a job you need a Canadian experience. ठीक है? तो उसमें फिर I would recommend that, I mean, don't go for a very low job because वो आपकी ego को hurt करेगा. But try for a job which is more or less आप manage comfort कर सकते हैं. Just try to get 1 or 2 good names on your CV and I think inshallah the going forward it will be a smooth sailing for you. Yeah. So I would personally recommend Canada to everybody. Not just because my experience has been good, because it's a good country. You get close to nature here. The trails are amazing. The provincial parks are beautiful. We recently did a drive to Thunder Bay. Me and my friend drove for 16 hours non-stop. But we loved the experience. The roads were amazing. The scenery were out of this world. Something like you see on the movies. उसके अलावा the system is good. System taxes are a bit tough, yes, but it's worth it. I think so. और जितना जल्दी आएंगे उतना ही आपके करियर में और लाइफ में बेहतर. That's it. Thank you. Thank you so much, Professor, for coming into my show, and I hope you have enjoyed the conversation with Faisal today. And keep liking our videos, subscribe our channel and share it if you like. If you have any question related to this particular video, post it in the comment section and I think Faisal would love to answer them, any Sure. specific related to finance or banking. So thank you once again and thank you, Faisal. Thank you.